are just months away. We are already into the fag end of January, and perhaps by the month of April, we'll be deep into the election season. And that one question that most political pundits, most political observers, and interestingly voters have also been asking is, will she, won't she? Will Behenji take a stand? Will Mayawati be a part of the INDA alliance, or will she be a part of the NDA alliance? Today, on her birthday, she's answered that question. She says, come what may, I am fighting solo the big battle of 2024. She also does say in the same breath that she is not averse to any kind of post-poll alliance. Now, Mayawati, many say, is a mystery. She's an enigma in herself. She's risen from the ranks. She, for the longest time, has held the Brahmin and the Dalit vote in the state of Uttar Pradesh that has 80 Lok Sabha seats. The last time around in the 2019 elections, you would recall that Akhilesh, Mayawati and the RLD led by Jayant Chaudhary actually got in together to ensure that they defeat the BJP. They did not defeat the BJP. The BJP bagged 62 of the 80 Lok Sabha seats, but all of them together picked up 19 seats. And many said that had Behenji not been a part of that entire alliance, she would not have even won those many seats. Because if you would recall, in the 2014 Lok Sabha elections, Behenji and her party could not even open their account. So then what explains what Mayawati has said today? Is this a setback for the INDA alliance? Or is this trying to keep the door open and perhaps take a call at a much later level? Could this also split the Dalit vote bank that the BJP believes that it has been garnering very, very strongly in the last assembly and the Lok Sabha elections? The story has seen sharp reactions that have come in from the Congress. The Congress alleges कि बहनजी डर गई हैं और डर की वजह से बहनजी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही हैं. But there is no love lost between Akhilesh and Mayawati, is what all of us know. For the last few INDI meetings, Akhilesh and his party has made it very clear that if Behenji forms a part of the alliance, that is the India alliance, we will not be a part of it. Though many said that that was Akhilesh actually using Mayawati as a bargaining chip to ensure that he's able to get more seats from the Congress. But now that Mayawati has made her decision very, very clear, like I said, the BJP has also said that this is a big setback for the INDA alliance. We'll first up listen in to exactly what we've heard from Mayawati today. Could she just be that game changer in the Lok Sabha elections of 2024, particularly in Uttar Pradesh? And also, we'll play out reactions then coming in from the other parties that she has named. And today she also says कि Akhilesh Yadav गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं. So will the SP make up then later with the BSP? Sit back and watch what has happened through the day. हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी. अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ रखें और उनको इतनी ताकत दें कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ सकें. देश की सीमा से लेकर के देश की संसद बीजेपी सरकार में असुरक्षित है. जो हक मार रहे हैं उनसे भगवान उनको लड़ने की ताकत दे. कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं. गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत होगा. तब की परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा कदम उठाया जाएगा. जो बहन जी ने एक लाइन कही कि गठबंधन में जाने के बाद उनका नुकसान होता है. अब इंडी अलायंस में जो लोग हैं उनकी विचारधारा से बहन मायावती जी की विचारधारा नहीं मिली. जो इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहा है, इनके लोगों के यहाँ से घरों के दीवारों में चुने हुए पैसे निकल रहे हैं. So Akhilesh changes his colors like a chameleon. Then Behenji also says कि भाजपा लोगों को फ्री राशन देकर
गुलाम बना रही है. But many say that this is typical Behenji style, typical Mayawati style. So, Mr. Mecca, your party tried very, very hard to ensure that Mayawati joins the INDA alliance bloc, but you have failed for the moment. I do not know whether Anurag Bhadoria, who represents the SP, is going to be a happy man. Will he be celebrating? Because they, for the longest time, said, we do not want Behenji in the INDA alliance. Now, RP Singh Saab, for you, mission 80 in Uttar Pradesh becomes very, very easy. He's representing the BJP on the panel, and we also have Kush Ambedkar, who's a BSP supporter. And as I say good evening to all of you gentlemen, I want to begin with Kush and ask him, कुश, आप भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को और मजबूत करना चाहते हैं? नहीं, ये तो आपका सवाल ही गलत है। अभी कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि हमारी तो सभी सीटों पे तैयारी है, हम तो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, तब आप उनको क्यों नहीं बीजेपी की बी टीम बोलते हैं? अभी तक किसी भी डेलीगेशन ने अच्छे से जाके बात नहीं की है और लगातार चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ मैंने तो कहा ही नहीं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को और मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो बीएसपी की लड़ाई है बीजेपी से, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि लो भाई आप भी उसी मनोवाद में लगे हुए हैं, ब्राह्मणवाद चीजों में लगे हुए हैं। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, कभी शंकराचार्य के पैरों में चले जाते हैं, कभी उनको अनाप शनाप भी बोलने लग जाते हैं। उनकी तरह टिप्पणियां भी नहीं करते, सर्वजन की बात करते हैं। अम्बेडकर राइट मूवमेंट को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो भी उनके लिए कदम ठीक रहेगा वो कदम लिया जाएगा। या आइडियोलॉजिकल फाइट है, ये नहीं है कि भैया दो आपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनकी तो आइडियोलॉजी एक ही जैसी है। दोनों की पार्टियों में गुंडेगर्दी फुल हुई है, दोनों की दोनों उसी तरीके से दलित उत्पीड़न दोनों की सरकारों में होता है। तो इसमें बीजेपी जो बीएसपी है उसकी लड़ाई, लेकिन कुछ क्या भूल गए कि 1995 में 1995 में एक पोस्ट पोल अलायंस हुआ था और आप भाजपा के सपोर्ट से ही बहन जी वहां पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो देखिए हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। बट कुछ मुझे एक चीज बताइए, आज बहन जी ने अखिलेश यादव पे अटैक किया है, भाजपा पे अटैक किया है, घोर जातिवाद वाली पार्टीज है, धन पर राजनीति करती हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या अकेला लड़कर आप सत्ता परिवर्तन करेंगे 2024 में? वो तो अब जो इससे पहले का 2019 का इलेक्शन हुआ था वो एक साथ लड़ा गया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो बीएसपी में शिफ्ट नहीं हुआ। जो यादव कम्युनिटी का वोट था वो जाके बीजेपी को वोट डालाया। अब उसमें बीएसपी क्या करे? अब सिर्फ मुस्लिमों के दम पर तो समझौते नहीं हो सकते, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कोई बंधुआ मजदूर तो मुस्लिम है नहीं है। वो तो जो बीजेपी को हराता दिखेगा उसके साथ वो जाएगा। अब जो बहन जी है उनको अपनी कम्युनिटी का भी देखना है, और दोनों पार्टियां जो सपा है या भाजपा है, दोनों जातिवादी पार्टी रही है, दोनों के राज्य में दलित उत्पीड़न होता रहा है, दोनों सामंती पार्टियां हैं। तो इसलिए ये जो निर्णय है बीएसपी का, ये बीएसपी के हित में आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। देखिए बहन जी ने क्या किया है इंटरेस्टिंगली, अनुराग, इज दैट उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी पोस्ट पोल अलायंस के खिलाफ नहीं हूं। तो नंबर्स आने के बाद बहन जी किस तरफ जाती है अभी किसी को नहीं पता, बट जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी 1995 में तो भाजपा के सपोर्ट से ही बनी थी। लेकिन अनुराग भदौरिया, आज आप खुश हैं या आप खफा है? क्या आप चाहते हैं कि बहन जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने या नहीं? अखिलेश यादव को तो उन्होंने गिरगिट तक कह दिया है आज। देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, और समाजवादी सा से शुरू होता है ना, तो सा से ऐसे संविधान होता है। तो हम संविधानवादी लोग हैं और हमारी भाषा की मर्यादा होती है। हम किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और हम सबका सम्मान करते हैं। और राजनीति में हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सभी से हो सकते हैं, अलग अलग दल है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद में हम किसी को व्यक्तिगत कुछ बोलने लग जाए, ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति और संस्कार नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जनता के लिए, कोई व्यक्तिगत नहीं है, जनता के लिए। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है, तो जनता को वादे किए थे
इन्होंने 2014 में, 2019 में, हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी होगी, किसान नहीं खुशहाल नहीं, वो होगा, आप छोड़िए एमएसपी की प्राइस अनुराग। अनुराग मिलेगी, देखिए, महिला अब अत्याचार कुछ खत्म हो ही जाएगा, समय रह या गया महंगाई इलेक्शंस बेरोजगारी के लिए। अब खत्म मुझे हो बताइए जाएगी। कि अब बोलने भाजपा का दीजिए। तो मिशन 80 है। भाजपा का मिशन 80 है उत्तर प्रदेश में। क्या आपको नहीं लगता मैं कि बोल अगर बहन जी अरे प्लस समाजवादी बो- पार्टी प्लस अरे मैं कांग्रेस बोलने का तो दीजिए। गठबंधन अरे होता, आपको प्लस जवाब मिल आरएलडी का जाएगा मुझे। गठबंधन होता, तो आप बेहतर टक्कर दे सकते थे भाजपा आप को? मुझे बोलने तो दीजिए। जब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं तो कैसे आपको जवाब मिलेगा? आप बीच में सवाल पूछने लगेंगे तो हमारी बात ही कट जाएगी, अधूरी बात हो जाएगी। मैंने कहा कि अरे हम चिरकुट समाजवादी पार्टी भी लोग आपने ही का कांग्रेस को एक समय पे कहा था ना अनुराग। अरे देखिए, बोलने सीधी तो सीधी दीजिए बात मुझे। करते आपका हैं, सवाल सीधी हो तो सीधी गया। बात करिए। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तो जवाब कैसे मिलेगा? आप बता दीजिए। अगर आप ये मन मान के आई हैं कि नहीं मुझे ये बुलवाना, तो आप बोल दीजिए, मैं वही बोल देता हूँ। अरे सवाल आपने पूछ लिया, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं तो मैंने आप कहा कि बताइए ना, आप कैसे समाजवादी उत्तर प्रदेश समाज जीतेंगे? हो गया ना, तो आप सवाल हो गया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, क्योंकि जनता के साथ भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने धोखा किया है। जनता को जो सपना दिखाया था महंगाई का, क्या महंगाई कम कर दी? क्या महंगाई कम हो गई? डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो गई? क्या किसानों को सम्मान मिल गया? क्या युवाओं को उनका रोजगार दे दिया आपने? क्या आपने महिलाओं का सम्मान किया? क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई? क्या यहाँ पे किस तरह का स्वास्थ्य शिक्षा में जिस तरह का स्वास्थ्य की जो हालत है, शिक्षा जिस तरह से यहाँ पे स्कूलों में मिल नहीं रही है, समान शिक्षा की बात हुई थी, क्या हुई? नहीं है ना कुछ। तो जनता हमारे जो हमने जो विकास की राजनीति की थी, हमने जो विकास की बात की थी, हमने जो जनता के लिए किया था, हम उस बेसिस पे जनता से वोट मांग रहे हैं। और जनता मुझे पूरा विश्वास है 80 की 80 सीटों पे जनता भारतीय जनता पार्टी को तो हराएगी, आपको बहन क्योंकि जी की जनता ने मन जरूरत बना है या दिया नहीं है? कि- ये बताइए ना सवाल अनुराग, क्या है? इससे पहले आई गेट इन मिस्टर मेका एंड आरपी सिंह साहब, क्या आपको बहन जी की जरूरत है या नहीं है? मुझे जनता की जरूरत है, जनता के वोट की जरूरत है। और जनता को मैं मुद्दों पे, जनता को मैं बीजेपी से मुद्दों पे लड़ रहा हूं। हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, जो आपको सपने दिखाई थे पूरे नहीं किए। तो हम जनता के बीच में है, जनता चलिए से वोट ठीक है, मांग रहे हैं। आप जवाब और नहीं जनता देंगे, मुझे लेकिन आशीर्वाद आपको देगी। याद होगा 1993 में क्या हुआ था। 1993 में अनुराग मिले मुलायम काशीराम, तो आपको याद है वो पूरा नारा, और कैसे आप आपको लोगों ने शायद तब याद भाजपा नहीं को होगा रोका कि था। लेकिन आप या तो देखिए, आप 2024 ईमानदारी से 2000 नहीं चाहते हैं भाजपा को रोकना। यही सवाल आपसे और बहन जी से पूछा जाएगा। लेट्स गेट मिस्टर मेका नहीं, also आप on the screen. Mr. Mecca, before I get in RP Singh Saab here, see, the Congress tried desperately to woo Behenji. But why is it that Behenji does not believe that she should be a part of the INDA alliance? Is this how you will win the state of Uttar Pradesh at least? First of all, you loaded your question with an assumption. Congress was desperately trying to woo Behenji. कौन बोले आपको? Which source? Okay, fine. You are the media. You can have your sources. You can have your अविनाश पांडे जी guesses. का नाम सुना है, Fine. अजय राय का नाम सुना है, मिस्टर मेका. All these are leaders on record. No, Sunil. इमरान Okay, मसूद, fine. अजय राय, See, Congress and India Alliance, everybody are trying to invite everybody. चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो इंडिविजुअल सिटीजन हो, जो लोग संविधान को रक्षा करना चाहते हैं, उस सबको हमारा दरवाजा खुला है। आज बहन जी एक स्टेटमेंट दिया, जैसे ही वो किसी गठबंधन में नहीं जाना चाहते, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए हो, तो खत्म बात हो गया ना। तो इसमें व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया अलायंस इन दैट? As if she is going and joining NDA. She is not, right? So वो अपना रास्ता चुन लिया, तो there ends the matter. हमारा लड़ाई जारी रहेगी। What is her अपना रास्ता, Mr. Mecca? And it's good that you're conversing that well in Hindi, because ultimately उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, 80 लोकसभा सीटें हैं। अनुराग भदौरिया और कुछ दोनों ये बात मानते हैं, लेकिन आप बताइए ना, you try to ensure that you get everyone on board. Without the state of Uttar Pradesh, can you defeat Narendra Modi in 2024, Mr. Mecca? We want all the 140 crore people to listen to the issues we are putting before them and make a choice. That's what we are putting in the first step before the political parties and the organized sections, right? So similarly, Mayawati ji and BSP is also part of it. Okay, today she decided that she is fighting this election on her own because she is not yet confident of any of these alliances. That's what I read from her. So she has every right to decide that way.
That doesn't mean. So is that a vote of no we're stopping. confidence also in the INDA alliance? See, Mr. Mecca, that's exactly what I'm asking. Is this not a vote of no confidence in the INDA alliance? No, it's her opinion. Okay, see, listen. Till yesterday, people were saying, "Oh, Mamta is going, Nitish is going, Kejriwal is going, INDA alliance is breaking." Now today, that is all done for several months. Now today, people started saying, "Oh, Maya Behenji is not coming, so India alliance is breaking." अरे ये क्या हो रहा है? ये 38 पार्टी का गठबंधन है जो एनडीए, उसमें कौन क्या जा हो रहा रहा है है? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। नहीं मिस्टर मेका, ये क्या हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार को आप कन्वीनर का पोस्ट ऑफर करते हैं, declines the post. Arvind Kejriwal, I'm not sure if you have seen his tweets. You know, the Congress has decided not to be a part of the Pran Pratishtha, but Arvind Kejriwal says कि हम कल से ही सुंदरकांड का पाठ कराएंगे. So you have to decide, you know, कि ये चुनावी हिंदू कांग्रेस पार्टी बनना चाहती है या अरविंद केजरीवाल की तरह आप, मतलब you want to allege that still he's the B team of the BJP and much more. But RP Singh Saab, you know, are you not scared कि this decision by Behenji could actually go either ways? What if the Dalit vote splits? The Dalit vote actually has gravitated towards the BJP in large numbers. This includes a lot of those Labhartis also. How do you think that Behenji's decision to stay away right now from both the NDA and the INDA alliance will work out, RP Singh Saab? First, let's understand what's the reason for Behenji to withdraw from IND alliance or from maintaining a distance with SP and speaking the language he has spoken, that Sapa wale to girgit hai. The reason is clear. He has experienced what happened in 2019, and then the spokesperson of the BSP has just now said that they never transferred vote. I mean, actually they think it's something like a vote bank which you can transfer. It's not merely mathematics. I mean, that you join hands and your workers and your voters will join hands. That never happened in 2019. I mean, BSP did better than SP in 2019 election, and then they were expecting to do much better, but they are seen on ground that people don't join hands. I mean, the workers don't join hands. The leaders can put their posters and they put their smiley faces on the posters, but it doesn't work on ground. So it didn't happen in 2017 also, when Congress and two bhai joined hand in 2017 election. Bua Bhutija formula didn't work, so probably Behenji thought let's go alone, and then all the best to her. But fact is that the Congress spokesperson was talking about the India alliance. I mean, what's the condition of India alliance? Let's talk about Congress. How many seats Sapa or Akhilesh Yadav will give to India alliance in UP? Through Congress in UP, probably 1 or 2, maximum 2. I mean, even if he obliged with second one, it will be big deal. I mean, as per my information, it's just 1. And how many seats Mamata Banerjee is obliging Congress in Bengal? Even today, Kunal Ghosh has said that Congress has no stand in Bengal. I mean, they should remember what was the outcome of the assembly election, last assembly election, where they fared just 0, and they could merely make RP Singh one Saab, it's MLA good that you've done so much of research and hard work on what's been happening in the INDA alliance. But बहन जी आज एक और बात कहती है, अनुराग उसके बाद आपके पास और कुछ के पास आती हूँ। बहन जी ये भी कहती है कि भाजपा लोगों को फ्री राशन देकर गुलाम बना रही है, तो आप लोगों को गुलाम बना रहे हैं, ऐसा कहती है बहन जी। जी मैं बोलूं 13.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया, हमको लगता है गुलाम बना रहे हैं, तो उनका भला हो। और लगभग 11 करोड़ से ऊपर किसानों को किसान संबंधी सम्मान निधि देकर उनकी चिंता की जाती है, उनको लगता है गुलाम बना रहे, तो उनको भगवान उनका भला करे। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के थ्रू, हेल्थ कार्ड के थ्रू उनकी सेहत की चिंता करी, अब उनको लगता है गुलाम बना रहे, तो भगवान उनकी चिंता करे। कोई 11 करोड़ लोगों के घर पे नल का सीधा पहुँचाया पाइप के थ्रू, अब उनको लगता है कि हम लोगों को तंग कर रहे हैं या लोग उसमें नहीं, हम बहकावे में ला रहे हैं, तो भगवान उनका भला करे। और अगर हम 4.5 करोड़ लोगों को सिर पे छत दे पाए, तो अब उनको उसके बाद भी लगता है तो लगे, परंतु द फैक्ट इज दैट पीपल आर नॉट बीइंग डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन और एवरीथिंग। आई मीन दे आर बेसिकली जस्ट 4 कैटेगरीज, वन इज पुअर, वन इज वुमेन, youth and farmers, and all have been taken care by my government, by Modi ji's government, and ensured that every segment is taken care.
And then 80 करोड़ लोगों को हम राशन इसलिए दे रहे हैं कि there was a problem during Corona, and we don't want people to stay in that trouble. I mean, it's just a period of another few years so that people can come out of that Corona issue, and if they have suffered some losses or they have suffered some problem during Corona, that should be taken care. And that's why give me another second. That's why our economy is doing so अनुराग, well. अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए सेक्युलर वोट्स को एक साथ रखने की जिम्मेदारी तो एसपी की भी थी ना। अब अखिलेश यादव दिन रात कांग्रेस के प्रति वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस अखिलेश को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन जरूर मतलब आप भी ये जानते हैं कि बहन जी की जरूरत आपको भी उतनी है जितनी उनको है ना अनुराग। एक्चुअली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखो कितनी चिंता है इंडिया गठबंधन की, लेकिन एनडीए गठबंधन के बारे में इनकी कोई रिसर्च नहीं है कि ये अपना दल को कितनी सीट उत्तर प्रदेश में देंगे, बता पाएंगे निषाद पार्टी को कितनी आप सीट दे रहे हैं, वैसे ही है ना, बता पाएंगे आप लोगों को राजभर को एनडीए कितनी की सीटें, चिंता मेरी बात होती है, पूरी होने लेकिन दीजिए, इंडिया राजभर को अलायंस की कितनी कोई सीटें चिंता देंगे। नहीं होती है ना। आप भी ऐसे ही जवाब देते हैं अनुराग। मैं एनडीए गठबंधन की बात करने लगा, आप परेशान होने लगे। भाई एनडीए गठबंधन की भी बात हो जाए ना, कितनी सीटें देंगे शिवसेना, अजीत जो सिंधे गुट को है, कितनी सीटें देंगे जो अजीत पवार की एनसीपी आई है। आप चिराग पासवान को बहन जी पे सवाल होता है, आप उद्धव ठाकरे पर जवाब, हम भी हाजीपुर से लड़ेंगे, वहां रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। सेना पे जवाब देते हैं, एक मिनट, सवाल तो बहन जी पे है ना, आप बहन जी को लेकर आज कुछ नहीं बोल पा उसके बारे में तो बताइए। आप इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता जनता की करना चाहिए, जनता की कैसे जनता खुशहाल हो, और एनडीए गठबंधन की करनी चाहिए कि आपस में कैसे सीट शेयरिंग होगी। आप हमारी चिंता कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में आपकी चिंता हो रही है, और तब बयान याद हो आपको अखिलेश यादव जी का, दूसरे के घर में जब यूपी की बारी आएगी वो बता देंगे। अरे अपना घर देखो जो लूट गया आपका। आप बताइए चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे कि चचा? हमारा घर ठीक है, हमारे घर में कोई हल्ला नहीं, हमारे घर में कोई बर्तन नहीं खड़क रहा, ये आपके ही जो बर्तन खड़क रहे हैं, आपकी जो खींचातानी हो रही है, आप ही का जो कहा जाता है चिरकुट कहा जाता है, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, यू नो लाइक दे फेमसली से अनुराग, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब कुछ और आता है, लेकिन अनुराग देखिए आखिर के कुछ मिनट बचे हैं। अनुराग सीरियस हो जाइए ना, क्या बहन जी की तरफ आप लोग कोशिश करेंगे उनको इंडिया अलायंस में लाने की या नहीं? अरे मेरी बात सुनिए ना, नहीं मेरी बात सुनिए, ये मेरे बारे में बहुत पूछ रहे थे ना। चलिए आप मुझे बहन जी को लेकर तो जवाब दीजिए ना। एक सीट का बता दें, छोड़िए मैं ज्यादा सीटों की बात ही नहीं करता, एक सीट पे बता दें, एक अरे सीट का आप बता दें। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं अनुराग, 80 लोकसभा सीटें छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना ज्यादा सीटों पे, एक सीट पे बता देना। आप लोगों के इनको कौन लड़ेगा हाजीपुर से? चिराग पासवान लड़ेंगे कि पारस जी लड़ेंगे? बता दीजिए, बताए बीजेपी पर ठीक है, कुछ तब और सीटों पे चर्चा हो जाएगी। जवाब देना चाहते हैं, ठीक है कौन लड़ेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, नॉन सीरियस लोग हैं, इसलिए आप देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसे, अभी यहाँ पे बैठ के बिहार की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने बोला ना अखिलेश सुबह से शाम तक 60 समाचार देते रहेंगे। अब बताइए मुद्दा क्या है और किस बात पे लड़ाई लड़नी? नहीं कुछ देखिए, अगर बहन जी इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ी होती ना, तो उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत अलग होते और 2019 के नतीजे भी कुछ अलग हो सकते थे, लेकिन we've just lost that line with Kush. I'll give the last word to Mr. Mecca, last 10 seconds to him. Mr. Mecca, do you think the Congress will still be trying to get in touch with Mayawati? Do you want her or you don't want her? Mr. Mecca. See, for us, everybody is welcome, as long as your commitment to fight the Tanashahi is intact. Okay, so currently, as you can see, BJP is busy with the temple activity and politicizing Ram. Congress Party and India Alliance is busy with Nyay ke liye ladai and also getting their seat sharing act together. So people are seeing who is doing what. It's not simply just bringing a narrative won't work. People are seeing it. It's clearly the optics is BJP Ram Bharose chalna chahte hai. No, but Mayawati does not believe in the India alliance. No, Mr. Mecca, that is the truth. Fine and now. That is why she's leaving all her options open. See, there are so many parties who are not part of either India Alliance or NDA. They have that right. Okay. This is not a Tanashahi, right? They have that right as political parties. Okay.
तानाशाही कल मिलन जोरा ने बता दी थी कैसी there is तानाशाही है this famous कांग्रेस पार्टी phrase, में। sour grapes. पहले बोलिए मुंबई साउथ Sitting मिलियन English. दिया रखो। I leave it there. मुंबई साउथ दे रहा I leave it there, RP Singh साहब. I completely run out of time. आपकी उन्हीं में से अंगूर खट्टे हैं ना, कहते हैं मिस्टर मेका, क्योंकि हिंदी में इतनी बातचीत हो रही है तो अंगूर खट्टे हैं. But we'll wait and see where the story goes. I thank RP Singh साहब, Anurag, Mr. Meka and Kush for joining us. Mayawati says no to either India or the NDA alliance. What happens next? We are tracking that story, heading into a quick break. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। Amity has been ranked India's #1 private university for the 11th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. जहाँ यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। MG Aster, it's built around you. Welcome home. Hello Aster, it's your connected world. Your playground. Hello Aster, open sunroof. Opening sunroof. Introducing MG Aster 2024. Now starts at 9.98 lakhs. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नू टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली दे बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा जीरो आ रहा मेरा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। मेरे ते यकीन तुसी कीता तो यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। Tata.tv. Whenever I had ice cream or cold water,
I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Just another tycoon. Hustling way too early in the morning. Passing on this happy tune. Helping babies feel at ease. Aw, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a tycoon. Volkswagen. Yes, Papa. Life doesn't stop for anyone. Even we won't let you stop. At every stage of your life, with LIC, you are always insured. LIC, हर पल आपके साथ. Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The cupboard. The laminate is a Manish Malhotra design. Century Laminates by Manish Malhotra. Fashion for your furniture. Live it up, live it up. Trending burning question, powered by Reva University, Century Laminates, AMNS, Acco Insurance and Hyundai Summit. Thank you for joining us here on the Trending Burning Question, ladies and gentlemen. In the run-up to the Ayodhya Ram Mandir inauguration, now we've had some bizarre comments coming in. Some parties can't just digest the fact that the Ram Mandir is finally going to be inaugurated. For example, there are some leaders who say that, watch out, another Godhra may happen. And there are some leaders who say that more mosques will be targeted. Asaduddin Owaisi has made a controversial comment while fear-mongering on mosques. He says Muslims must protect mosques. Now, these comments are coming out increasingly ahead of the January 22nd date in Ayodhya, which is fixed for the Ram Mandir inauguration. Take a look at what Asaduddin Owaisi said and then we debate. मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए। अपने मस्जिदों को आबाद रखिए, दीन इस्लाम पर फख्र करिए, कुरान और सुन्नत पर अमल करिए, अपने इख्तिलाफात को बाजू रखिए। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद
मस्जिद को अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए। अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। दीन इस्लाम पर फख्र करिए। कुरान और सुन्नत पर अमल करिए। अपने इख्तलाफात को बाजू रखिए। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से। Anila Singh of the BJP joining us on the trending burning question. Syed Aslam, political analyst. Syed Abbas will be joining us from Bengaluru as well. Adil Hassan is a spokesperson of the AIMIM. So I have two parties, the AIMIM also on the debate. Adil Hassan, why is Asaduddin Owaisi saying that there is a threat to mosques and that Muslims need to shield mosques, etc.? Why? बॉस इट इज रियलिटी ना। जब क्रिस जन्मभूमि वाले मामले में जब 1968 में जब 50 साल पहले दोनों समुदाय के लोगों ने समझौता कर लिया, हिंदू मुसलमान मिल के रहना चाहता है, तो ये 50 साल बाद फिर से क्यों आपने शुरुआत करवाई? और खुद मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत खोजिए। आप समझिए गौरक्षक के बारे में उन्होंने क्या कहा है, आप खुद सोच लीजिए कि मोहन भागवत जी ने आप थोड़ा बताइए कि क्या शुरुआत किया है गोरक्षक पे मुद्दे पर। नहीं, कौन क्या शुरुआत किया है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। शुरुआत आपने बोला शुरुआत की है, क्या शुरुआत की है बताइए हमें। जो पता है संभ्रम, ये जो है जनवरी 22 का बिल्डअप शुरू हुआ है, लेकिन क्या शुरू हुआ है आप एक्सप्लेन कीजिए बीजेपी को, अनिला सिंह को। 50 साल पहले जब क्रिस जन्मभूमि वाला मुद्दे पर दोनों समुदाय ने समझौता कर लिया था, फिर उस चीज को रीओपन करने की क्या जरूरत थी? बीजेपी को इसमें मजा क्यों आता है? आप बतलाइए। अरे भाई आप क्या, आप 2019 में है क्या? वो मामला सेटल हो चुका है। आदिल हसन जी हाँ, आप तो जो बात कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं 2019 में हुआ था। मैं क्रिस मथुरा के मुद्दे पर बोल रहा हूं। मैं मथुरा के मुद्दे पर बोल रहा हूं, वो ईदगाह के मुद्दे पर बोल रहा हूं। समझ गया। नहीं समझ गया। मैं बोलता हूं, मैं बीजेपी से पूछता हूं, मैं अनिला सिंह से पूछता हूं, क्योंकि अनिला सिंह से भी एक प्रश्न है मेरा। अनिला सिंह जी देखिए, आपका एक सांसद है, उसका नाम है अनंत कुमार हेगड़े, वो कर्नाटक में है। क्या आपको पता है वो सिटिंग एमपी है? आपको पता है कल उन्होंने क्या बोला है कर्नाटक में? उन्होंने बोला है सैटरडे को, उन्होंने बोला है कि हमें जो मस्जिद है मंदिर के ऊपर उसको हम लेंगे, बदला लेंगे। वो बोला है रिवेंज लेंगे, रिवेंज। मैंने नहीं बोला, वो बोला है। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा बताइए। आपके सांसद अगर ऐसा बोलेगा कि वो भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। अच्छा, मथुरा है कोर्ट में है, काशी ज्ञानवापी कोर्ट में है, कर्नाटक के जो मस्जिद है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट दीजिए प्लीज, अनिला सिंह। My Ram to all, and you have to go and ask Mr. Anant Kumar Hegde that why did he say this thing. But I know it very well that this nation was divided on the platforms of religion. 1947 responsibility. I mean, he's an MP from your party. धर्म के आधार पे हुए थे। एक बन गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा भारत होना चाहिए था। भारत was for Hindus, for Sanatanis. All right. So no, I'm sorry. In whole of the world, Niranjan, I would want to stop her then and there. If she believes in the Constitution of India, if she believes in the Constitution of India, she cannot make such अयोध्या statements. हो गया, अभी आप काशी मथुरा पे भी शांत हो गए, बहुत प्यार से आप the Constitution of India. Okay, or not. she's saying, she says Ayodhya they fought. Okay, one second. Anila Singh, I got it. Anila Singh is saying legally, through a legal battle, they were able to build a temple in Ayodhya. One thing, if we talk about Sanatan, if we talk about Hindu, then the sentiments of Sanatanis are Bharatiya Janata Party and RSS. You must understand this thing. Do not try to target Bharatiya Janata Party all the time. We are here to give justice to each and every citizen living in this country, but it doesn't mean that just to be successful in politics, we are going to do deep tactics of
appeasement. That is also earlier, that is one of the comments. Anila, I got your point. Anila, okay, fine. Anila, I got your point. Let me quickly get rejected then. Asad Abbas and Aslam. Yeah. Aslam, see, you can't say you can't take Anand Kumar Hegde's statement. See, his statement was day before yesterday, okay? His statement was the day before yesterday. But there's another leader in Karnataka who said another Godhra will happen. He said 2 weeks back another Godhra will happen. From where? He said I have credible evidence. Where is the evidence? Has he shared it with NIA? Has he shared it with CBI? Who has he shared it with? Has he shared it with the local first police? Of all, Niranjan, why are people fear mongering? Okay, I got it. Why? So Niranjan, thanks. All right. So Niranjan, first of all, I would want to say the fact of the matter is the court verdict is out. Okay, a rich Ram temple is being built. Okay, and the consecration is definitely happening. We have to accept this fact and let the Muslims in India and all the people in India have magnanimously accepted the verdict given by the Supreme Court, and today the rich Ram temple is being built. The question is, after the Ram temple is consecrated, there are multiple fringe elements, the so-called fringe elements in the BJP who are making nasty and comments full of hatred. When the Prime Minister says you're not supposed Who is to to explain this fringe? Where is this fringe? What statement is the fringe made? Please tell me. Till Ram Lala's idol is consecrated. I am telling Talk about the you. fringe. Tell me the fringe. Name There the is fringe. something. Name the there fringe. is some. Niranjan, there is Name the something fringe. called as Places of Worship Act 1991. I want to ask Anila Singh ji, God. do you believe in the Constitution of India? You spoke about Hindus, you spoke about Constitution Sanatanis. talks We about respect equality. the faith of crores of people. There is equality no as doubt well. about it. Even we are happy. have Even been today always we on are target. happy. The We temple have is been being targeted built. by Congress Okay, party and but other having political said that, parties. do you believe in the Constitution? Okay. You speak about Sanatanis, you speak about One second. Rashtra, The Places you of speak Worship about so Act, many Syed things. Aslam. The Syed primary Aslam, the Places of elementary Worship Act. question 1 minute, which 1 I have minute. is, 1 minute, do you 1 minute. believe in the It's Constitution a of convenient India? argument, Syed Aslam. Let me tell you something. Syed Aslam, let me tell you something. Syed Aslam, let me tell you something. See, what happens is in the 90s, and late 80s, when Rajiv Gandhi decided to allow the Shilanyas for the locks to be opened, right? There's a reason why he did that. He was under pressure in the Shabano case, so he tried to do a balancing act. Everybody knows that, it's history. Yeah. Right? Yeah. In 1991, you spoke about the Places of Worship Act. Now, we all know why that was brought in also, no? But you can't say that in 1947, the way a structure was, is the way it will remain forever. If there has been a historical wrong done for centuries and decades and centuries, right? One minute. It's a matter which is in the courts. To throw some light It is a matter being dealt with by the courts. My question is to Syed Abbas. No, let me ask. 1 minute. Aslam, wait. You've spoken. Let me ask Abbas. Abbas, why is Owaisi asking, making such comments, asking people to be careful of mosques, right? Why is this fear mongering? See, everyone is okay. Life is okay. Everything, law and order is completely fine. Except for the opposition or some in the opposition who say, hey, watch out, a train is going to burn. Hey, watch out, there are going to be riots. Hey, watch out. We have to be wary about, places of worship. Now, where is this coming from? Firstly, Niranjan and I absolutely do not advocate what Owaisi has said. First and foremost, like my good friend Aslam said, there is undoubtedly been magnanimity in accepting the decision. And Owaisi, I believe, as a young Indian Muslim youth, does not represent us. He only represents his political party and their followers. Largely across the length and breadth of India, over 20 crore Indian Muslims have wholeheartedly accepted the verdict and are looking forward to a Bhavya Ram Mandir. I'll tell you, what does Imam Ali say? We are a brother in faith or equal in humanity. As a matter of fact, Islam says, Lakum deenukum waliyuddin. Hamara deen hamare saath, aapka deen aapke saath. To me is my religion, to you is your religion. Dividing factors like an Owaisi are no good for the society. Why do you want to erupt venom of sorts? I am a qualified Indian youth and I do not follow his words or any attributions of his. I think largely we need to look ahead, India progressively. Allama Iqbal very beautifully said, Niranjan Saab, that Lord Shri Ram is Imam-e-Hind, which means leader of India. We respect him as Maryada Purushottam Ram. I think that is the way to go.
Today, I as a Muslim will respect Lord Sri Ram. My Hindu brothers, my Christian brothers will respect my prophet and my faith. That is the secular fabric of this beautiful country. Dividing figures like Owaisi or Anant Kumar Hegde or any of them must be unequivocally, unconditionally condemned for the statements they make. We do not want leaders who divide us, rather unite us. As a matter of fact, Samasta Kerala Jamiatul Ulma, all the Maulvis in Kerala came together and made a statement that opposition parties, if they wish to attend the consecration ceremony at the Ram Mandir, they absolutely have no problem with it. And their religious sentiments will not be hurt. I think that is the way ahead to go. No, I'll tell you, there are some parties are, I'll tell you, for example, I've heard some bizarre comments. I've heard some bizarre comments, Abbas, and I'll get Anila and Adil Hassan in this one. I'll get Anila to speak first. See, Anila, there are some people who still, I'll tell you, I was, in Republic Kannada, our latest channel, there was one leader, one guy from the Waqf board who came, right? And he said, Mandir wahi, he said Masjid wahi banayenge, right? Now, there are people like that, and then you hear such comments, and then you figure that there are some people who are extremely uncomfortable with the fact that the Ram Mandir is coming up. They're extremely uncomfortable. And they just can't see it happen. And I'm pretty sure that the majority of the Muslims living in this country, they have not accepted this decision of Supreme Court magnanimously, as two my co-panelists are mentioning here, because we have seen and I have debated with them time and again on the topic of Bhagwan Shri Ram's temple getting constructed there in Ayodhya. Show me one protest held against the verdict. Show me any petitioner who went against the Supreme Court's verdict. Ma'am, for you. 1 minute. I have to tell Anila Singh something. I have to. 1 minute. Aslam and Abbas, 1 minute. Aslam and Abbas, 1 minute. I have to tell you a fact. Hear me out. Anila, at 6 p.m. I broke a story. Anila made a comment. And 1 second, Anila made a comment that she feels that majority. She said a majority. 1 minute, Anila, wait. Anila, you said majority of the Muslim community perhaps has not accepted the Ram Mandir verdict. You're wrong. The RSS survey, ma'am, the RSS survey results are carried in the evening at 6 o'clock. RSS survey said 75% of Muslims are happy with the decision, and that the fact that the temple is coming up and everything is okay, they're happy with it. I don't know where you're getting your stats from. Absolutely. I think a majority of the minority is happy that this is finally ending. It's over. Yes. I think. Yes. Or that's what the RSS survey says. Not me. I didn't say it. RSS survey says. Yes. Why do we? I want to get Adil Hassan. Niranjan, I just want to tell you. I don't know why do we do the. Adil is a small minority in the minority. For this hatred. Aslam and Abbas, I think, I'll tell you what, Aslam and Abbas, Adil Hassan is a small minority in the minority who's not happy, I feel. And I am telling you, Niranjan, I just want to tell you one thing. Niranjan, I just want to tell you one thing. What we as Muslims expect in India. No, my question was to Hassan. My question was to Hassan. Niranjan, I will tell question you was what to Hassan. we Abbas don't as hijack. Muslims Abbas don't hijack. expect in India. If any political Question was to party, Adil Hassan, yaar. Question was to Adil Hassan. Hold on. Adil Hassan ke liye tha. Prashno. If any political Abbas and party Aslam. wants to do anything Abbas and Aslam. Wait, for hold on. This is Muslims, between Anila they Singh and have to Adil Hassan. be Hold on. focused on education. They have Hassan, to be focused on let what Hassan they get the will last do word for in, the yaar. health sector. Aslam, don't speak over him, please. We are doing very well in health services as well. Do not start comparing Sanatan with education and health and employment. Please have some respect for our religion as well. मुझे अपने धर्म पर मान है, पर किसी दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करती हूँ, तो आप भी मेरे हसन जी बताइए, last 10 seconds है, बताइए, बात कीजिए जल्दी. Whenever we talk about Mahadev, No one has done it. We are the advocates. Hassan, we are the advocates of peace and brotherhood. Last 10 seconds. Last word to Hassan. He hasn't spoken. In your party, the leaders in your party. हमने किसी को पाकिस्तान जाने की बात नहीं की, हम भारत. Okay, just Anila Singh and Hassan, please. I want Hassan to speak. के लिए मरेंगे. हसन बात कर रहे हैं वहाँ पे. हम कभी जाना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं. मोदी जी नवाज शरीफ के घर जाते हैं. ये तो मेरी मिट्टी है, मेरा घर है, भारत मेरी सरजमी है.
हम यही जिएंगे, यही सजदा करेंगे, यही मरेंगे। आपको दिक्कत है हमसे, आप माइनॉरिटी बजट कम करते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूशन का बजट कम करते हैं। देखिए वो गलत है अनिला सिंह जी, वो गलत है। वो पाकिस्तान जाइए वाला चीज बोलना बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपको नहीं बोलना चाहिए वैसा अनिला सिंह जी। पाकिस्तान क्यों चाहिए, पाकिस्तान क्यों जाना चाहिए? अनिला सिंह, शाहिद असलम, शाहिद असद अब्बास and Adil Hassan. I've run out of time. This is the debate coming up at 10 with Arnab. Stay tuned. Stay tuned. Arnab's debate coming up next in just about 3 minutes. Thank you. अन्ना, आपका हिंदी बहुत अच्छा है। Powered by Reva University, a social impact multidisciplinary university. Century Ply Club Prime, Raho Befikar. ArcelorMittal Nippon Steel, India बनाऊंगा मैं, बनेगा भारत। पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके। सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। Amity has been ranked India's #1 private university for the 11th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. सब जानचा है, परखा है, समझा है, इसलिए मेरे समझदारी का नाम इंट्रा है। टाटा की नई इंट्रा V20 पिकअप है इंडिया की पहली बाय फ्यूल पिकअप जो दे आपको बढ़िया ड्राइवेबिलिटी, सुपीरियर ड्राइविंग कंफर्ट, ज्यादा लोडेबिलिटी, सबसे ज्यादा माइलेज, जो दे सबसे ज्यादा रेंज। टाटा इंट्रा V20 पिकअप, सब कुछ उठाए, हर दिन जिताए। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
By the blessings of the Lord of the universe, Shri Jagannath, the historic Shri Mandir Parikrama project is getting dedicated to the people of Odisha and the world at large. The Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, Gajapati Maharaj Divya Singh Deo and other dignitaries will be performing a Mahayagya. You are cordially invited to the Lord's abode in Puri to join the same. इस दुनिया में बस हम दो हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है। आ रहे हैं हम दोनों। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा मैं। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। Tata.tv. Dadu, Yes? what does premium mean? Beta, premium you can say is like petrol. The car will keep going till the time it has petrol. Once petrol is over, the car stops. But Dad, this time even if the petrol is over, our car won't stop. How come? With LIC's Jeevan Labh, even after the premium payment tenure is over, the policy's benefits continue. That means our journey of happiness will continue non-stop. LIC, हर पल आपके साथ। This is Republic Diva Bupa Studio, your one-stop for all the breaking news updates, and I am Nikita Sahai. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी ना रुके, सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। By the blessings of the Lord of the universe, Shri Jagannath, the historic Shri Mandir Parikrama project is getting dedicated to the people of Odisha and the world at large. The Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, Gajapati Maharaj Divya Singh Deo and other dignitaries will be performing a Mahayagya. You are cordially invited to the Lord's abode in Puri to join the same.
From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate. Arnab Goswami at 9, presented by Amity University, powered by RP Goenka, Century Club Prime, Policy Bazaar. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. When I had the privilege of speaking to Gurudev Sri Ravi Shankar earlier today, he told me in the course of that interview we'll play at 10 p.m. tonight that there are some people who thrive in conflict in the context of the build-up to the Ram temple issue. And I cannot agree more with him. I would in fact go a step further and say that I believe there are some people whose purpose of existence is the presence of conflict. The more the conflict, the more assured they are of their relevance and their existence. So when the conflict of Ayodhya is resolved peacefully, through a peaceful agitation, ladies and gentlemen, a legal process and a final resolution, then this group starts to get very insecure. The leader of this group, in my view, are the Owaisis and Sonia Gandhis. Today, Asaduddin Owaisi says that Indian Muslims should protect their mosques because under the present government, the mosques of India are under threat. These perpetual liars, this Jinnah-type logic to boycott buses because of chants of Ram being played and boycott the Pran Pratishtha because the RSS is active in the organization, this typical Jinnah mindset, whose only shot at relevance is to divide to rule, is not going to work anymore. How many more lies, ladies and gentlemen? How many more lies? Look at their track record. You think of CAA, they lied to you. You think of NRC, they lied to you. You think of all they said that Kashmir will separate after the Article 370 revocation. Look at the reality. They lied to you. You think of triple talaq, they said the Muslim women will oppose it. Muslim women have benefited and have welcomed it. They lied to you. The question is, how far can we allow political parties who are registered in our country to try and seed and plant insecurity on, and then go on to the grand sermons of secularism? Each time they lie, they justify it in the name of secularism. And I think it's time all of this unfortunate toxicity from the pseudo-seculars, their hateful language, their hate speech of the lobby comes to an end. My view is that these perpetual liars like Owaisi, whose existence is hinged on spreading insecurity, even when there is none, needs to be called out for once and for all. Don't you agree with me? I think as the elections approach, you as a voter and we as an electorate, we need to think about it. Ladies and gentlemen, the first debate tonight is very important. How should the Muslim community view the inauguration of the Ram Mandir, the Pran Pratishtha, as Owaisi tries to fearmonger them? Ladies and gentlemen, debate 2 tonight is replaced by an unmissable episode on Ayodhya with a person who played such a key role in the mediation process before the court verdict. Gurudev Sri Ravi Shankar is with me tonight at 10 p.m. That's a special tonight. And here are the headlines this Monday evening on the debate tonight. As India awaits the Ram Mandir inauguration, Owaisi provokes with a must protect mosques now remark.
BJP hits out at Owaisi, says divide and rule politics will not work anymore. Top sources say Arvind Kejriwal invited for the Ram Mandir inauguration, but will he attend? In an exclusive interview, Gurudev Sri Ravi Shankar says the opposition must review their decision to boycott the Ram Mandir Pran Pratishtha. Mayawati snubs the Congress alliance offer, set to fight the Lok Sabha elections on her own, solo. And summoned by the ED, BRS leader K. Kavita asked to appear for interrogation in connection with Liquorgate. Ladies and gentlemen, India is celebrating unity and harmony ahead of the grand Pran Pratishtha ceremony. But Asaduddin Owaisi